Hello. Today we are studying the last topic and the last module of your syllabus. From next lecture, we are taking the revisions and reviews of your all points. Let's start. The first point of last module is risk. Okay, risk in derivative. The last module is risk in derivative. Out of this, the study of the types of risk in derivative. Okay, the main topic, the risks are allocated under with the derivative are credit risk in the risk of loss due to the failure country to the perform an obligation to institution. The buyer and exposes the risk that the counterparty may not deliver the understanding underlying the where the seller is there. Means काय आहे बघा the खरं risk काय आहे the risk of the first risk point is the credit risk. The main point is the risk are the year the credit. It means the contract are right, contract or the bill are right on time of the rate. The both party are on the both risk. एक party become the debtors and secondary party become the creditor. But the both are on credit. Debtors are the risk कि उसके अमाउंट नहीं आएंगी त्यांचे पैसे वेळेवर नाही पोहोचणार आणि क्रेडिटर आर द रिस्क द गुड्स आर नॉट सप्लाय ऑन टाइम ओके बोथ आणि त्याच्यावरती जो कॉन्ट्रॅक्ट रिस्क आहे ते एक एक पॉइंटवर त्याने पुन्हा रिस्क कसं जनरेट होतं ते केलं लाईक प्री सेटलमेंट रिस्क हा कुठला रिस्क आहे सेटलमेंटच्या आधी यानी पेमेंट मेच्योरिटी पेमेंट होने से पहले कौन कौन से रिस्क हमें दिखने वाले in the risk of loss due to the counterparty defaulting on the contract during the life of the transaction, the level of exposed various of the life of the contract. It means जिथपर्यंत the life of contract आहे 3 month 4 month तिथपर्यंतच्या आधी जर का कॉन्ट्रॅक्ट डिव्हिलेट झालं तर मग कसा रिस्क फॉलो होणार आहे त्या रिस्क बद्दलचं बोललो. Okay, then settlement risk. And just this settlement risk is the risk of loss due to the failure of the counterparty to perform of its obligation after the institution has performed of its obligation. ह्याच्यामध्ये सेटलमेंट रिस्क में क्या होता है कि कौन सा रिस्क होता है कि at time to obligation the rate becomes high, time to obligation the rate becomes high, and to the higher risk this main settlement are done there, and this settlement is known as payment of high rate in future. This is also risk in your future contract. Okay. Also the market risk. Market risk is the valuation of market in future. कि अभी जो ले रहा हूँ कि फ्यूचर में उसका क्या रेट रहेगा. This risk is the risk of loss of account of address change in the market value, the price of an instrument of portfolio instrument. It means कौन से जो portfolio में हम लोग use करने वाले. Maybe today is the 100 rupee in portfolio market. 100 rupee market price maybe is 110 in future or 19. In this 10 rupees का जो change हो रहा है in the future. Then liquidity risk. Liquidity is a money risk. Okay, the risk of loss due to the failure of institution to the mean and the fund required to the extension transaction. Extension transaction are the reasonable price as basically refer in inability to convert asset into the fund. ओके. अब इस लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है जो इंटेंजिबल गुड्स तुम्ही परचेस करणारा द ट्रान्झॅक्शन आर गुड टू पार्टी असेटेबल और इंटेंजिबल टेंजिबल असेटेबल इंटेंजिबलचा जो सेटलमेंट पॅटर्न आहे त्या सेटलमेंट पॅटर्नला आपल्याला फंड भेटणार आहे इफ द बिफोर द पेइंग दिस फंड द कॉन्ट्रॅक्टर द क्लोज दॅट हिज बिझनेस देन तुम्ही काय करणार द इयर द पेमेंट आर नॉट पेएबल किंवा तुम्हाला फ्युचर ओरिएंटेड मॅच्युरिटी अमाऊंटच भेटणार आहे. इट इज लिक्विडिटी रिस्क. And from that the become the new point market liquidity risk. Market liquidity risk, under this risk that the institution may not be able to the existing the offer to existing position of quickly and suffering the quantity to reasonable price. This inability may be account of inadequate market depend on the certain product. For example, existing driver long dated ऑप्शन. इट मीन्स मार्केट लिक्विडिटी रिस्क यानी मार्केट में जो रेट लगाया हुआ है या मार्केट में जो पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर होने की जो लिक्विडिटी पीरियड है और उसके बाद अगर नॉट रिकवर इट्स टाइम देन इट्स मार्केट एग्जिस्टिंग पोजीशन क्विकली है तुम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व तो हो रहे हो बट
not recover in this sufficient quantity at the responsible price. लेकिन तुम जो खरीद रहे हो उस प्राइस के हिसाब से सफिशिएंट है, हाँ या ना नहीं, उसका जो आंसर जनरेट होता है इज लिक्विडिटी रिस्क. ओके, द फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क इज बेस्ड ऑन द फंड बेसिस, जो फंड प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर से. रिस्क इज द potential inability of the institution to meet fund requirement. अब कोई किसकी पोटेंशियल होती है, इनएबिलिटी ऑफ उस इंस्टीट्यूशन की जो फंड प्रोवाइड करने वाले, अब फंडिंग करने वाले एज पर योर रिक्वायरमेंट, अराइजिंग आउट ऑफ द कैश फ्लो मेजरमेंट एट द रीजनेबल कॉस्ट. ओके, then the next point is operation, operational risk. Operation is an activity, are those defined as those defined in the inadequate the information system of internal control, which would result in unexpected loss. This risk is associated with human error, process, cellular system, cellular inadequate process, and can get magnified in the continued evaluation, complex nature and cost. Okay, the next point is लीगल रिस्क. लीगल इज लीगल फॉर्म, यानी तुम्ही जो पेपर्स प्रोव्हाइड केले जा रहे, कागदपत्र प्रोव्हाइड केले जातात आणि अदर डॉक्युमेंटरी हे खरे आहेत की खोटे आहेत त्याच्यावर डिपेंड होणार आहे. तो कॉन्ट्रॅक्ट रिस्क. दिस इज दॅट द कॉन्ट्रॅक्ट मे नॉट बी लीगल, इन्फॉर्मेबल और डॉक्युमेंटरी करेक्ट. लीगल रिस्क शुड बी द कंट्रोल and management through the policy development by legal counsel. Okay, legal risk. देन रेग्युलेटर. रेग्युलेटर म्हणजे तुमचा रेग्युलेटर आहे ज्याच्या अंडर ते चाललेलं आहे, लाईक NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ह्यांची जी पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये चेंज झालं तर जो होणार आहे तो रिस्क. Regulatory risk is a risk that entitled party particular participation in derivative markets may not have required the clarification of operation in the segmentation of may be defined on the company with the regulatory requirement in this would expose that entity to fine and pension penalty, serious lapse may result suppose of legal action. Understand? Then systematic risk. Systematic risk can be described as a design advisor impact on the multiple market player due to the failure of large organization institution with the mark. सिस्टमॅटिक रिस्क म्हणजे जे मोठ्या ऑर्गनायझेशनला जे काय म्हणतात TQM पॅटर्न असतो, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट, त्या मॅनेजमेंट मध्ये जो त्यांच्यामध्ये म्हणजे 99.99 परफेक्शन पण 0.1% जो नॉन परफेक्शन असतो इट इज सिस्टम. ओके, देन सिस्टमॅटिक अँड unsystematic. The kind of systematic and unsystematic risk are the extension on the market risk concept. Unsystematic risks are effect on the single stock or assets or classes of assets. Such risks arise from the factors which are unique in individual stock assets. System risks are affected multiple assets classes in the outcoming economy change which has a cross essential impact. Stock official uncertain. Okay, then the next point is identification of risk. How can you identify the risk? Okay, the derivative are the risk transfer device. Derivative काय आहे? Risk transfer. आपण आधी काय शिकलो? Last 3 models we have studied the number of commodity pattern and this commodity are work under the derivative pattern. Okay, the derivative, what is the derivatives word are used for that? See, how can you convert your risk by investing anywhere, index market or anywhere? The derivative risk transfer the device and therefore is important to identify the fully comprehension the risk in the assuming evaluation those risks and continuously monitor the manage control those risks each party to derive. The contract should be able to identify all the risks, index, price, long, short, and term span. Okay, part of the risk identify process is the determinant of the monetary expenses and parties under the terms of derivative. In short, कसं काय कॅल्क्युलेट केलं जातं त्यासाठी कुठली पॉलिसी फॉलो केली जाते ह्या सर्वां
ची जी स्टडी आहे त्या सर्वांची जी स्टडी सर्वांची जी स्टडी आहे त्या स्टडीला त्याने वन बाय वन रिस्क इव्हॅल्युएशन सिस्टीम मध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे. इन्व्हेस्टर अँड अदर मार्केट पार्टिसिपेशन जनरली लुक कमर्शियल रेटिंग एजन्सी अँड इव्हॅल्युएशन आणि ह्याच्यासाठी ते लोक काय करतात रेटिंग एजन्सी जसे एनएसडीएल वगैरे जे पुढे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन ह्याच्यावर सीडीएल वगैरे त्याच्यावर जाणार आहे. लाईक कुठलं कॉलेज छान आता तुम्ही ही स्टडी केला तर ते कुठलं कॉलेज छान हे गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे किंवा नाही त्याच्यावर स्टडी होत नाही तर त्यांना युजीसी युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ह्याने किती रेटिंग दिलं आहे तर पुढे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो मी कसं असतो तो आणि त्या कन्सेप्टवर तो फॉलो केला जातो. द डिग्री ऑफ रिस्क विच इज वन पार्टी willing assuming the another individual could be changed. Okay, the identification risks are these number of the first is source analysis risk. Source analysis. A risk source may be the internal or external. The system will be the subject risk management. Okay. आता फर्स्ट रिस्क आहे सोर्स. आता सोर्स कुठला आहे आपल्या बिझनेस साठी ते आपण फॉलो करणार आहोत मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल आउट ऑफ दॅट. ओके. देन सेकंड इज प्रॉब्लम Then second is problem analysis. Risks are related to the identifying the problem event. For example, the likelihood of losing money, a possibility of confidence information in traded. Risk problem analysis कुठला आहे? Risk are related to identify the problem event. प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करण्यासाठी जो इव्हेंट म्हणजे मे बी पुरामध्ये मिस्टेक आहे ते फाईंड करण्यासाठी जे आपण पॉलिसी जनरेट करणार आहोत त्या पॉलिसीमध्ये उचलणारे जे अनालिसिस सिस्टीम आहे इट्स नॉट is your problem analysis system where either the source of problem is known तुम्हाला माहित असणार आहे that the other is unknown. Event as the source may be the tie to the event to that claim leads to loss can be investigation. कशासाठी आपण तो लॉस करतोय इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी आणि ते इन्व्हेस्टिगेशन कसं केलं जातं the methods are common risk identification methods are number one objective based objective based risk identification. Organization and the project teams have the object and event may ending the achievement objective part. Then scanning based risk identification. Scanner based in is scenario analysis method. The different scanners are created. They are the respected and alternative way to achieve the objective and analysis at the information multiple pores. For example, market or better. Any event that tigers and understand scenes are alternative to identify risk. Then taxonomy based risk identification. Under this taxonomy is the breakdown or a possible risk based on the taxonomy our knowledge of based on participation questionnaire are created. The answer here replaced to the question evaluation risk. Okay. Then the common risk. Common risk checking क्या असणार आहे in survival industry checklist बनवली जाते with the no risk are available. No risk जे रिस्क असणार आहे ते आणि त्यावर पुट केलं जातं लाईक मटेरियल आया है कि नहीं उसकी टिक की जाती है ना अमाउंट टिक की जाती है एंड दैट्स ऑल. ओके. The risk charting यानी चार्ट बनाया जाता है चार्ट बोर्ड बनाया जाता है उसके ऊपर टिक किया जाता है from this I recover. Okay. This method is combination about the method by listing risk this बनाई जाती है. Okay. Then the new point is measuring of risk. How can you measure the risk? तो उसके बहुत से पैटर्न है. There are the different methods of the measuring risk. Some of that range. पहले तो मेजर कितना बड़ा रिस्क है वो फाइंड करो. Okay. The discrepancy is the return to viewed against the difference between the higher and lower return value or historical period. This is the system consider only the external value by the failing to capture the variability of the data. Then variance. अब variance में क्या होता है कितनी variance पता है अगर यहाँ रिकवर हुआ बाद में आया तो और कितने हाई लेवल से रहेगा उसके बाद आया तो कितनी रिकवर होगा देन उस वक्त हमें क्या पॉलिसी इन वेरिएंस आर डिफरेंट इन different movement different risk. Okay. The different dimension of all possibility values, the return are due against the estimated return. This method is considered super to the higher superior pattern.
It's not as a variant risk. Okay. Then रेगुलेटर, मैं पहले ही बोला यहाँ कुछ बोला हुआ था रेग्युलेटर रिस्क, इससे ह्याच्या आधी पॉईंट आहे तर त्यावरून हा पॉईंट म्हणतो रेग्युलेटर. तर रेग्युलेटर कोण असतात? तर रेग्युलेटर इट मीन्स सांभाळणारे तुमचे रिस्क मॅनेजर प्रोव्हायडर जे सिक्युरिटी एजन्सी आहे त्या एजन्सीला सांभाळणारे. लाईक आरबीआय, आरबीआय इज अ रेग्युलेटर ऑफ बँकिंग सेक्टर. बँक आर द एजन्सी टू हँडल युअर रिस्क, बट बँकला कोण हँडल करतो? आरबीआय. लाईक हिअर सेबी, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज हँडल एनएससीए, बॉम्बे स्टॉक, बीएसई वगैरेना हँडल करतो. म्हणजे ह्यांचं समजलं का? बँकर्स बँक, लाईक रेग्युलेटर्स रेग्युलेटर. The amendment in the defense of the security under the Security Act, including the derivative contract, to provide the environment derivative target to take place under the provisions of the security contract. आता ह्यांच्या सेबीज वर्क वगैरे तुम्ही एसवाय मध्ये स्टडी केला असाल, द मेन पॉइंट ऑफ सेबी अँड ऑल, ते जर तुम्हाला पाठ असतील तेही जास्त मला वाचायला लागणार नाही. डॉक्टर एल जी गुप्ता कमिटी, आता इथे कमिटीचे नाव आहे, constituted by the CB laid down to the regulator framework to diverting the trading in India. CB is also framed suggested by law. आता सेबीचं मेन काम आहे मॅक्सिमम वेलफेअर करून देणं, शेअर मार्केट वगैरे मध्ये जो होणारा लॉस आहे त्या लॉसशी वाचवणं कोणाला? फॉर कस्टमर, एजंट सिस्टीम मध्ये काहीतरी लूक आणणं, कारण की एजंटने तुम्हाला लुटलं नाही पाहिजे अँड ऑल द सेबीज वर्क फॉलो. ओके. बिटवीन द frame the suggested by laws of derivative exchange segment, and then the clearing the corporation house, which is the provide the provision for trading and settlement to derivative contract. The rules by law and regulation of derivative segment exchange and their clearing the corporate house. Okay, and the applications of derivative exchange segment is clearing the all trading system. Okay. Then the next point is the corporation house is eligible. आता काय काय असतात ते रेग्युलेटरचे वर्क? The first is derivative trading to take place only through the online screen based trading system. Derivative कशावर होतो? ऑनलाइन स्क्रीन. आपण ऑनलाइन शेअर मार्केट जास्त घेतो. The derivative exchange segment shall have online surveillance capability to monitor position, price and volume and real days determine the market municipal. म्हणजे त्याच्यावर सर्व डिटरमाइन झालं पाहिजे. लाइक मैं मनी कंट्रोल की तुम्हें वेबसाइट शेयर किया था, तो उसके अंदर हमें ग्राफिकल से लेके ऑल पैटर्न में किया था, उसके अंदर होना चाहिए. The derivative exchange segment should have suitable arrangement for dissemination of information about trade and quantity and quotes. कितना है, कितना बेचना है, कितना बिक चुका है, सब उसके अंदर आना चाहिए एट परफेक्ट लेवल. The derivative exchange segment should have the adequate aggregation and investigation. उसके अंदर एग्रीगेशन इन्वेस्टिगेशन के ऑल पैटर्न को आना चाहिए. Then derivative or exchange segment should have satisfactory system for monitoring the investor complement to preventing the irregulator in the trading. अब इस irregulator के रेटिंग के लिए जो रेगुलेटर यूज होना है, इरेगुलेटर के लिए जो रेगुलेटर जो वेबसाइट यूज होने वाली है उसको अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए. रेटिंग इट मीन्स अब रेटिंग क्या होती है जो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे वो पॉइंट आने वाला है. लाइक दिस के पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन करना है तुम्हें. इसमें सब रेगुलेटर के अथॉरिटीज को दिया हुआ है. क्लीनिंग द कॉर्पोरेटिंग हाउस फॉर द ऑल नोविशंस, the clearing shall have the capacity to monitor the overall position of member across member कितने both of the derivative market कितने होने चाहिए. Okay. Then the new point is the membership in derivative market. The membership कैसे होगी? The first trading member. कौन होता है member? A trading member is a member of the derivative exchange can be trade their own behalf of their client. ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? जो खरीदने वाला होता है. अब ऑनलाइन ट्रेड होता है तो एक ही मेंबर हुआ होता है जो ऑनलाइन परचेस करने वाला होता है. सेकंड इज रेगुलेटर. देन क्लियरिंग मेंबर कौन होता है? दिस मेंबर इज परमिटेड टू द सेटल देयर ओन ट्रेड एज वेल एज. अब जब ट्रेडिंग मेंबर एक है तो क्लियरिंग भी उसी बंदे की होगी, तो ओन वही रहेगा. ओके. देन सेल्फ क्लियरिंग मेंबर. A self-clearing member is those clearing members who can clear all settlement there on the trade only. यानी अगर तीनों सेंटेंस को अगर गौर से पढ़ेंगे तो तुम्हें एक बात समझेंगे कि ऑल टाइम यू कैन टेल अबाउट
the one member who can involve in business or this business. Okay, clearing member are required to provide the liquidity assets which is adequate cover various margins in liquidity net worth requirement and the clearing time. Method may deposit liquidity asset in form of cash, bank or collection may be as a prescription. Okay, देन द अभी जो मैं बोल रहा था कि रेटिंग एजेंसीज तो एजेंसीज के ऊपर स्टडी करने वाले हैं तो आउट ऑफ दिस रेटिंग एजेंसी में जो है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें क्रिसिल वगैरह बहुत से हैं आई एम टेलिंग यू दैट आउट ऑफ दैट द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएससीसीएल एनएससीसीएल द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो किसको हैंडल करती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज द एनएससी लार्जेस्ट स्टॉक इंडस्ट्री अब ये लोग क्या करते हैं इतना स्टडी by the group of the leading the financial institute bank insurance corporation financial intermediaries in India but ownership management operation and the separated NSE has become the lead player to modernization of capitalization market towards this in NSE set up the first clearing corporation in India अब NSE क्या करती है इसके अंदर तो NSE के वर्क क्या होते हैं तो NSE के मेन वर्क होते हैं इसके अंदर क्यों रेट देती है लाइक यूजीसी रेट देती है कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन तो उसके रेट के हिसाब से अब यूजीसी कितना रेट देती है 5 स्टार देती है 5 स्टार आउट ऑफ दिस 5 स्टार यानी A प्लस देन 4.5 A then 4 B plus then 3.5 is B then 2.5 then 3 is B ऐसे रेटिंग दे जाते हैं आउट ऑफ दिस योर कॉलेज इज इन B प्लस इट मींस 3.5 और 3 के बीच में अभी तक वो लोग और ट्राई टू अचीव द 5 पॉइंट और वो अचीवमेंट 5 पॉइंट कैसे हो गए एज पर द यूजीसी के हिसाब से जैसे एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कॉलेज का देन वो प्रोवाइडिंग ऑल पैटर्न जो बच्चों के एक्सपेक्टेशन है जो स्टाफ का एक्सपेक्टेशन है वहाँ की ग्रांटेबल स्टाफ कैसा है और दे क्यों ग्रेड किया जाता है तो हम लोग अभी किस ग्रेड पे 3 पे यानी हमें 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है और जो पॉइंटिंग रहता है पॉइंट 1 से इंक्रीज होता है इट मींस डायरेक्ट 3.5 या 3.6 में मिलेगा 3 पॉइंट किसी के पास 3.01 है तो बी नहीं है अभी 3.02 है 3 ऐसे बहुत से कॉलेजेस है यानी वो 5 पॉइंट अचीव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाइक दिस यहाँ एनएससीएल क्रिसिल वगैरह भी जो रहते हैं वो तुम्हारे डिपॉजिटरी सिस्टम को रेटिंग देते हैं वो फिर बैंक रहे सेबी रहे या कोई भी रहे और उस रेटिंग पे हमें पता चलता है जो हाई रेट वाला रहेगा वहां पे रिस्क कम होता है जो लो रेट वाला रहेगा वहाँ रिस्क ज्यादा रहता है रिटर्न ऑफ योर मैच्योरिटी अमाउंट ओके ये सिंपल कंसेप्ट है देन फैसिलिटीज देखो क्या रिस्क मैनेज करते हैं कैसे बाय हाई रेटिंग सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोवर अब उसके ऊपर जो अगर सर्टिफिकेट एनएससीएल का है तो तुम्हें उस सिक्योरिटी के अंदर तुम्हें लोन वगैरह प्रोवाइड होते हैं कि हाई रेटिंग है अगर यहाँ से नहीं मिला तो एनएससी पे करेंगे हमें अंडरस्टैंड देन मल्टीपल डिपॉजिटरी है अब इसकी डिपॉजिटरी सीडी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है ये भी उसको हैंडल कर रही है ये लोग रेटिंग दे रहे हैं तो उससे क्या होता है उस रेटिंग को कवर किया जाता है द गाइडलाइंस ऑफ आईसीए इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टू डेरिवेटिव मार्केट उसने क्या गाइडलाइन दिया है तो फर्स्ट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस क्या चाहिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस मींस द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस जो ऑपरेट बाय सेबी क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ ट्रेडिंग डेरिवेटिव एक्सचेंज सेटलमेंट और इसके अंदर ऑल क्लियरिंग and settlement are trade happen to derivative के segment से future contract के segment से होनी चाहिए the next point is clearing members के बारे में उसने क्या गाइडलाइन दिया है clearing member means the member of clearing corporation and including all categories of clearing member as may be admitted as such by the clearing corporation to derivative segment then a client means a person whose instruction and whose are account to trading member enter into the contract of this person. Then contract month. The contract month means the month in which the exchange clearing corporation rules require for the contract.
देन डेली सेटलमेंट के बारे में क्या बोला हुआ है? द डेली सेटलमेंट प्राइस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डे और सच अदर प्राइस आर मे बी डिसाइडेड, क्या होनी चाहिए? डिसाइडेड होनी चाहिए और उतनी ही क्लोज होनी चाहिए। देन डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में क्या बोला हुआ है? डेरिवेटिव एक्सचेंज मींस अन एक्सचेंज एंड अप्रूव बाय सेबी होना चाहिए। किसके अंडर होना है? अप्रूव बाय सेबी होना चाहिए। फाइनल सेटलमेंट के बारे में क्या बोला हुआ है? द फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज क्लोजिंग प्राइस ऑफ द इक्विटी इंडेक्स। इसकी होनी चाहिए इक्विटी इंडेक्स, यानी एक इंडेक्स की इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या बोला हुआ है? लॉन्ग पोजीशन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स means the outstanding purchase obligation respect of equity index and future contracts are in point of time, जो बोला हुआ है उसी टाइम पे होना चाहिए। उस टाइम्स को एप्लीकेशन को करना चाहिए। देन ओपन पोजीशन के ऊपर क्या बोला हुआ है? ओपन पोजीशन मींस द total member of equity index future contract that have not yet been offset and closed by an obligation position। सेटलमेंट डेटा के ऊपर क्या बोला हुआ है? Settlement data means the data on which the settlement outstanding obligation and equity index future contract are required. Okay. Then here your syllabus are over. Thank you all of you. From next Friday or Saturday, अब जब CDM का लेक्चर होगा तो मे बी एक लेक्चर हम लोग डायरेक्ट टैक्स का लेंगे या फिर सर का जो सिलेबस है रिस्क मैनेजमेंट का, और रिमेनिंग टाइम में इसका रिवीजन लिया जाएगा, रिवीजन लेक्चर प्ले किया जाएगा। मे बी लास्ट नेक्स्ट फ्राइडे को लेक्चर होगा, सैटरडे को मेरा नहीं होगा, इट मींस आई एम नॉट इन शिपलोड, बट डोंट वरी, इट कैन हैंडल।